हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जो भी मुझे देख रहे हैं, फर्स्टली ये मुझे कहना है कि ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ 2026 हैज बिगन। दैट इज कि अभी तक 6 महीने जा चुके हैं और 6 महीने रह गए हैं। तो आपने जो भी सोचा था कि 1 जनवरी से मैं ये साल ये करूंगा या ये करूंगी, उसका अब 6 महीने रह गए। तो एक हम क्या करते हैं, जैसे 6th मंथ में एक गोल रीसेटिंग एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट इज अ गोल रीसेटिंग एक्सरसाइज? कि जब आप 6 महीने पहले, जब न्यू ईयर आने वाला था, आपने रेजोल्यूशन लिखा कि मैं ऐसे करूंगा, ये वैसे करूंगा, मैं 2 महीने में ये कंप्लीट कर लूंगा, मैं 4 महीने में ये कर लूंगा। ऐसे कुछ कुछ अपने स्ट्रैटेजी सोची होगी अपने आप से कि अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। बट सम और अदर वे द रियलिटी स्टिक्स एंड देन व्हाट हैपेंस इज, हम या तो बहुत रेयरली होता है कि वी अचीव द फीट, बट बहुत मोस्टली ये केस होता है कि वी पाइल अप, कि नहीं हो पाया है इसको, चलो आगे कर लेंगे, नहीं हो पाया था इसको, चलो आगे कर लेंगे। So today what we are going to do is हम थोड़ी सी उस एरिया पे बात करेंगे, how to achieve the consistency. If you have heard by any of the previous conversation ever, something which I keep on telling, that it is not about कितना आपका knowledge है. As a mentor of UPSC civil services examination, two things which actually decides your outcome is, first, number one, discipline. Second is your consistency. ये दो चीजें हैं जो आपके अंदर, चाहे जितने भी बच्चे क्लियर किए हैं इस एग्जाम को, या फिर मैं कोई भी एग्जाम को फॉर दैट मैटर, दे हैव नॉट डन इट बाय फ्लूक। ये दो चीज उनके साथ रही है, इसलिए द आउटकम रिजल्ट कम्स विच इज फेवरेट। जहां भी आपको लगता है कि मैं एक रातों रात पढ़ाई करके, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं रात को कर लूंगा, सेमेस्टर के एग्जाम्स मैंने दिए थे, वैसे मैं कर लूंगा, ये कर लूंगी, ओवरनाइट आई विल स्टडी एंड डू इट, समर अदर वे, वहाँ आपका मैकेनिज्म ही गलत है। और कहीं आप ऐसे सुन लेते हो टॉपर्स ने, बड़े हम्बल होने के चक्कर में कई बार टॉपर्स ये भी बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, जस्ट हम रेगुलर कर रहे थे। दे ट्राई टू सिंप्लीफाई मोर देन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये मेरा मानना है, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन डिफरेंट जर्नी, एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, उसका हार्ड या इजी होना इज अप टू मी। इट इज इंडिविजुअली डिफरेंट टू ऑल ऑफ अस। इट कैनॉट बी अ कॉमन थिंग। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम 5 मिनट में समझ आ गया है तो फैंटास्टिक, बट ये कोई रूल नहीं है कि सबको 5 मिनट में समझ में आना चाहिए। किसी को आधा घंटा लग सकता है, किसी को पूरा दिन लग सकता है, किसी को महीने लग सकते हैं, किसी को साल लग सकते हैं। So that's why the entire preparation of UPSC is not managed by something calculative कि नहीं ये आपको 2 मिनट में हो जाना चाहिए, ये मैं 4 मिनट में कर लूंगा, like that. तो that's why we move on with that. But as it is a, that every week I come over and we speak. Few announcements I'll make, because today mostly people who have actually prepared for mains, those who have qualified for mains. Here, what I have to offer is answer evaluation and answer writing sessions, and some power booster sessions of essay. If you wish to be a part of it, just reach out to me over WhatsApp, because there is no specific batch, or I'm not connecting anybody. Anybody who feels, especially repeaters, जो इंटरव्यू दे के आ चुके हैं और उनका नंबर मेंस के मार्क्स की वजह से नहीं आगे जा पा रहा है, you please reach out to me, and we have less time, but then there is always a way out. Second part comes is people who are preparing fresh, अभी जिनका सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिनका सेमेस्टर खत्म हुआ है, एंड दे आर फ्रेश इन द थिंग, मे बी आपने कोचिंग लगा ली है, मे बी यू आर थिंकिंग लेट मी स्टडी ऑन माय ओन अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी में करती हूँ, फिर मैं करता हूँ, एंड देन आई विल डिसाइड वेदर आई नीड टू डू। There can be many decisions to it, but studying is inevitable. पढ़ना तो पड़ेगा ही। For you, I'm going to talk about the GS Foundation plan, which is daily email you get, and it is absolutely the most low cost में बोलूँगा, and it is actually very only 90 rupees to start. That's what I consider as the most lowest commitment to start off with, to keep your regularity and keep your consistency. So we will talk about that. So there are two aspects, and third is optional. Okay, now I have also, after like
doing this mechanism, of the way I manage through daily email and online sessions, I have thought that I will take a uh, pre-launch session of geography optional. Okay, so that this entire month I will try to promote it in the sense that whoever wants to join their geography optional subject, and I'm going to design it in a very different uh, roll-on type of basis. We are going to have a separate session for it. तो मैं उसका एक form circulate करूँगा. You see, if you want to be a part of that, that will be the first batch of my geography optional online. Like when I've started Elevate IAS, तो उसमें पहली बार मैं geography optional लूँगा. But my intent is for Elevate IAS is to for UPSC self-study preparation and mostly GS. ऑप्शनल करने का रीजन ये है, डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन इज मेरा एक खुद का एक्सपर्टाइज और खुद की जो फोटे रहा है उस पे है. सेकेंड रीजन इज दैट some or other way, when GS comes with a huge scope of things to happen, and एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिटी की तरफ अगर हम अलाइन ना हो, so we don't find an area which is our ये मेरा एरिया, इसमें तो मैं बिल्कुल चैंपियन. तो वो एक तरीके से प्रोजेक्ट करने का, दैट इज द रीजन ऑफ स्टार्टिंग ऑप्शन. एंड सो दैट विल टॉक very later, अगर नहीं इस सेशन में, but I'm going to circulate it amongst all the aspirants, all the in my YouTube also a form to be filled, and maybe in after the mains we'll start the pre-batch, pre-launch of uh, which you call as foundation of geography, like that we can say, like optional. So ऐसा कुछ नहीं है. आई माई सेल्फ स्टडी प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपने कोचिंग ले रखा है कि नहीं ले रखा है. माई ओनली वे ऑफ सेइंग इट इज दैट यूपीएससी के लिए जितना रिलेवेंट है, एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना रिलेवेंट है, दैट इज व्हाट आई बिलीव आई कैन mentor you towards that. So number one is like most of your time, everybody says about the one discipline that you can clear this exam with discipline. But ये सोच के ही ना कि मैं कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, हाउ कैन आई बी दैट फौज बेस इंडियन डिफेंस फोर्सेस टाइप डिसिप्लिन में कैसे इनकलकेट करूंगा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड समथिंग, इट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फन. एंड many of the aspirants, half of the way they leave the UPSC journey, not because कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि they lacked any in resource में कुछ ऐसा नहीं. They were because दे पहला फुट जो था उन्होंने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को तो ना देके नॉलेज कलेक्ट करना या कंटेंट कलेक्ट करना उस तरफ ध्यान देना ज्यादा फोकस को तो दैट इज द रीजन व्हाई आई फील that consistency wise is very critical, and it is a skill which needs to be created right now when you start your preparation towards UPSC. In the meanwhile, if you're watching our YouTube live, they can uh, they can put their questions over there. I will reply, or DM me over the WhatsApp. The WhatsApp number is also there in the channel. Okay.
फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हम सुनते हैं वी स्टार्ट अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है प्रिपरेशन में। एक तो है कि अ, हमने एक फोल्डर बनाया टू कलेक्ट all the data of UPSC, and then what happens is you start collecting from every other source. वही एनसीईआरटी की किताब 50 वेबसाइट से अलग अलग बार डाउनलोड कर लिया, एंड देन यू आर अनेबल टू यू व्हाट हैव योर कंटेंट कलेक्शन सेशन जो है वो कभी एंड नहीं होता, देयर इज नो फुल स्टॉप टू इट, इट ऑलवेज कीप्स ऑन हैपनिंग, एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिजिटल information overload. Second is your in current part is your access to information through mobile. Even now also I'm sure हम internet के through है. It also generates a digital distraction. और बहुत सारे टाइम्स जो है ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सेल्फ ह्यूमिलेटिंग होता है, लाइक कि वो देखो वो क्या कमा दे रहा है, वो देखो वो कितना बड़ा फॉलोअर ले आ रहा है, वो कितना मतलब सम और अदर वे एवरीबॉडी अराउंड यू इज अचीविंग एंड व्हाइल यू आर स्टिल स्टक फ्रॉम द डे यू डिसाइडेड दैट यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। देन कम्स अ मेंटल फटीग, पढ़ पढ़ के क्या होता है कि you do not know whether you're enjoying the process or you're just doing it because you have to do it. There is a timeline to it. और एक अलूफ रहने की एक ऐसा आदत पड़ जाती है where you don't feel that you can hear out to anyone. So what happens is there is no external accountability to hold your whatever system or structure you have created. See, the challenge is that it's like a marathon. It's not like a sprint. It's like a marathon and it can extend for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years. And this is not a new thing. You will not be the first one अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ऐसा हो रहा है. There are many people who have gone through this. So struggle is not what basically uh, struggle wise is not what defines this not a character flaw. It is actually a signal that your preparation system needs redesign. So we need to think through that as per your psychological habits, as per your 24-hour schedule, as per your how can things align for your betterness. ये हमें सोचना है, ये नहीं कि जिसने कह दिया ये रूट, अगर आप ये रूटीन नहीं अप्लाई कर पा रहे तो आपके लिए होगा नहीं। मेनी टाइम्स किसी ने कुछ नहीं कहा, हम अपने ऊपर एक सेल्फ ब्लेम ले लेते हैं। दिस इज वन फ्रॉम। आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी मूवी देखी है या कोई ऐसी स्पोर्ट्स मूवी देखी है? देखी होगी, जिसमें हीरो पहले डेड हो रहा होता है, फिर उसके बाद अचानक उसको एक डिटर्मिनेशन का जोश उठता है, और फिर हाँ यही सपना है तेरा, और या फिर भाग मिल्खा, दैट दैट काइंड ऑफ फुल एक गाने का एक सिचुएशन आता है जिसमें बिल्कुल सुबह शाम फुल डेडिकेशन करते करते बाय द टाइम द सॉन्ग इज ओवर वो बिल्कुल चैंपियन लेवल पे, लेजेंड लेवल पे जा चुका है। तो ये हमारा फीड, ये जो हमारे अंदर जो फीड है ना, डिसिप्लिन, आयरन विल एंड ये सारा चीज हमको बॉलीवुड या इन सब चीजों से हम एक वी क्रिएट अ परसेप्शन अराउंड इट। नाउ व्हाट वी थिंक दिस क्रिएट्स की हम यूपीएससी वाले बच्चे क्या करेंगे इस चीज को करने के लिए। मैं 12-12 घंटा, मैं 15-15 घंटा पढ़ता था, मैं 20-20 घंटा पढ़ता था, मैं 28-28 घंटा पढ़ता था, लाइक दैट वी ट्राई टू क्रिएट आवर वॉल्यूमेट्रिक। अरे भाई, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ये चीजें करना। मतलब अगर आप इफ यू बिकम अ मॉन्क एंड यू हैव टू फोकस without sleeping for 6, 6, 8 months, that kind of talk you are doing. Yes, but this is not exactly happening. So when we claim that we are doing so much of study, या तो आपका सिस्टम स्लो है, और just because of the sake of comparison you are able to pull it off saying that कि मैंने भी इतना पढ़ लिया कि like that. Now when you think like this, your brain automatically projects also like this. Your thoughts, your thought becomes things. अगर आप ऐसा डिफिकल्ट सोचोगे
तो आपके लिए दुनिया डिफिकल्टी दिखाई देने लगती है। तो यू क्रिएट लॉट ऑफ योर क्वेश्चनिंग योर विल पावर, आप बहुत सारी चीजें करते हो। यू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विथ योर ओन इमोशनल स्टेट, अपना मोटिवेशन, and with this kind of a rigid schedule, you definitely create a burnout for you. This is the reason why, while in person आपको लगता है I started to doing following discipline, but मेरे से नहीं हो पा। तो ये जिस तरीके का जो इस तरीके का जो कंक्लूजन क्रिएट हो जाता है, which is not this thing. Second is, what is a burnout? You know, when what happens is कि आप you are just not able to push yourself, आपको फटीग आ गई, एंड यू जस्ट नीड अ ब्रेक, मुझे बस ब्रेक चाहिए, आपका मन तरस रहा है कि नहीं और नहीं हो सकता। बट द मोमेंट यू टेक अ ब्रेक और स्पेंड सम टाइम रिकवरिंग, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम, पढ़ लेना चाहिए। तो द डिमोटिवेशन स्टार्ट्स, यू स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, सेइंग कि ब्लेमिंग खुद को ही कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ब्लेम। इट शुड बी मोर अबाउट मैंने ऐसा क्या सिस्टम क्रिएट किया है, what is that I have created which I am not able to cope up with. Then your burnout का real reason निकलेगा, and you will have alternatives to look for. जैसे you start blaming yourself, you are not going to change in any scenario. You will remain the same person. Your hobbies, your natural जो elements. So that rather than that defining, you get the system around you in which you operate that define. तभी आप एक solution की तरफ निकल सकते। आई होप whatever I'm telling you today आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बातें आपको रिलेटेबल लग रही होंगी। आई नो दिस इज वेरी इट्स वेरी पर्सनल कन्वर्सेशन विच हैपेंस। हम अपने आप को हारा हुआ या हम अपने आप को ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं थक गया हूँ। वी पुश आवर सेल्फ और यू ट्राई टू एक जज्बा दिखाने के चक्कर में समटाइम बेवकूफ़ी हो जाती है। आई थिंक ये कोई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट, स्लोली स्लोली लिमिट बढ़ता है, स्लोली स्लोली जो है आपका जो कैपेबिलिटी बढ़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गो टू द जिम एंड वेट एट 200 kg वेट इन डे वन। यू विल, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट वार्म अप, विदाउट प्रिपेयरिंग, यू जस्ट विल ब्रेक योर बैक। बट वही एक 90 days का टाइमलाइन देते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे स्लोली स्लोली योर बॉडी इज एबल टू टेक द वेट of more than double the weight of what you want to pick. So the day when it arrives to pick that weight, you can immediately go and do it without it eats like butter. ये तो कुछ था ही नहीं। और वो रखने के बाद ही आपको कहीं कमर नहीं टूटेगी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं। So that is what is meant is when you create a system around you rather than telling yourself कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा भैया, हमसे तो ना होगा। सेकेंड इज, मैं सेल्फ स्टडी की बातें करता हूँ, जब हम इंग्लिश में सेल्फ स्टडी की बात करते हैं या गहन अध्ययन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमको बहुत तगड़ा डिसिप्लिन का इश्यू होता है। सबसे पहले कैसे करेंगे हम, दिन में उठ के करूंगा मैं क्या, कौन सा पन्ना पहले खोलूंगा, कौन सा पन्ना दूसरा, ये कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं इसी किताब में पढ़ा हुआ हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा। ये सारी सिचुएशन आएगी। सेकेंड्स, आप कुछ पोस्ट देख लेंगे, कुछ यूपीएससी और कुछ देख लेंगे, रील वगैरह देख लेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग की हाँ मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं जो सेल्फ स्टडी के रोड पे आ जाते हैं, एंड दिस इज दैट इज वेयर योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट्स, कि हम उस चैलेंज को एज ए रेगुलर ले लें, rather देन उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय हम उसको ले लेते हैं एज इफ कि ये तो रहेगा ही, इतना तो मुझे डेडिकेट करना है, ये एंग्जाइटी के साथ। तो दैट इज वेयर व्हेन इन लॉन्ग टर्म जो एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, आप प्रीलिम नहीं क्लियर कर पाते, मेन क्लियर नहीं कर पाते, यू आर स्टिल अनएबल टू नो कि मैंने गलती क्या की, मैंने तो पढ़ाई की थी।
ये भी डाउनलोड किया था मैंने, वो भी देखा था मैं, ये भी देखा था। So that is where the first and foremost challenge comes. We'll keep it to this image and then come back and take a 2 minutes break. We'll join in another 2 minutes. 5 minutes to be brief. Yeah, continuing from for the break, after the break, I'm sure all of you also would be watching FIFA 2026. The beauty of this game is, even if you are not a football fan, but if you follow the World Cup during the World Cup, you start getting a hook around it. And now when
The round 16 will start from 4th of July. Uh, the matches have become very, very, intensive. And even if you don't know the players, but when you start watching it, you realize that, the real reason why football is liked by so many in the world over. So even I am started getting, like as we go closer to the finals. So there are a whole lot of stories going on, and in fact, I feel like as a geographer, I know nothing to be ashamed. But many of the countries we have not seen. We study through books. So how you analyze a country and its culture and this thing is through such games or some movies or this thing. Initially, when my observation was there, that James Bond is a movie which actually takes you around the continent. Every movie they will actually show the geography very well. At least five James Bond movies you will see from 90s. Every part of the continent they have shown from all the geographical features, and you will start feeling like if I when you join my geography session and we talk about, you'll realize in every scene James Bond is actually showcasing the geography of the villain, or the everything is about the geography around it and how that story is wound up. When we talk about it, I'll share that. So, but this football World Cup, what happens? You come to know what are the first of all the flags. How do you remember the flags? And flags in which country and what is the country's capital. And then if you remember one of the player or the player who did the goal, that's it. At least 44, 45 countries on the world map, and which is in South America, which is in which continent. So something or other way to be creative and learning is happens. But football has its own. So while I took a break, I also got some messages that what are the next match for the day lined up in the night. So yeah. Anyway, now coming back to our continuity of as a UPSC aspirant, even if you've started in 6 months, it's been you've practiced. Few things which is going to offer you is which you're going to feel जो आप किसी को कह नहीं सकते, which you cannot even describe. That when you say that for example, you start chasing कि I'm going to study for 12 hours. I'm going to study for 15 hours. And imagine that you did it for a day. The moment you do it, you feel happy that I did some 15 hours. But will that, if the 15 hours that you have invested, whatever you learned in that 15 hours, is it there in your brain? Is it there to help you crack some questions? That we do not check. So what happens is 1 odd day of 15, 20 hours slowly starts making feel like a burden that कि मैंने तो इतना मेहनत किया फिर भी मुझसे नहीं हो पाया. When you fail the exam, when you fail the prelims, can you say that कि मैंने 15 घंटा पढ़ा था फिर भी नहीं क्लियर कर पाया? So these are something which is when you start becoming unnatural, or when you're not comfortable, but you have put yourself in the shoes of कि नहीं टॉपर बोलता है तो मुझे भी करना है. Nothing. You are just trying to keep yourself awake. पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई नहीं हो रही. So my first and foremost thing is कि even if it is 2 hours a day or 1 hour a day, you ऐसा पढ़ाई करो कि you should enjoy it and you should be able to recall it. When you meet a youngster, you are able to talk about that topic for in 10 minutes or 5 minutes, whatever it is. That should be the level of preparation. And it happens very slow. It is every day you deposit some amount of learning. ऐसा नहीं कि एक रात में बैठे और पूरा फेंक दिया. No. That should not, that's not the right way. So that's how, and once you do this, na, I promise you what happens is when you do this regularly, you will know that in your 24 hours of schedule, from the time you wake up to the time you sleep, which is the right time to keep it as decide it as a time for my study. And slowly, everyone around you acknowledges that nobody disturbs you around that. Today, the moment you become self-study preparation at home, first and foremost is you don't know when to start, what morning, at what study, what to start, which is my daily schedule.
Because it is not a college, not a school, not an office at 10 a.m. first lecture, then 10:30 second lecture, like that. But our body is designed like this. So we need to create our structures of timetable like that, where no disturbance should happen. ऐसा नहीं कि because you are at home, your mom says, come go bring some milk, go get some curd. These, and you feel like, no, I'm at home, so I can do this. Don't try. If you should stop yourself then and there. Because if that kind of distraction you allow, then you allow everybody to invade your schedule. You will never have your schedule. Having a schedule is the first and foremost skill set which needs to be prepared. Second is, don't make big goals. Always have small goals. A small goals will help you feel like a successful. Big goal will make you feel like a guilty. Because big goal you will not be able to achieve, and it will create more and more tension. ओहो मेरा 2 दिन का पढ़ाई रह गया, मैं वो 1 घंटा और पढ़ना था रह गया. Like that, it will keep on piling up, but you don't know what is piling up, but your stress will increase. So but if you actually say that no, मेरे को क्या है, दिन में 10 क्वेश्चन आना चाहिए. आई शुड बी एबल टू डू 10 क्वेश्चन, चाहे मैं बाथरूम में करूँ, चाहे मैं सोते वक्त करूँ, चाहे मैं गाड़ी चलाते वक्त करूँ, बट 10 क्वेश्चन आई शुड बी एबल टू कंप्लीट. So if you are doing that, then you know in self this thing, okay, I have considered my daily this thing, I have not missed out on my daily thing, but I might improve tomorrow, like that. तो ये एक अगर आप कर पाओ, दिस इज हट मैक्स दिस कर पाओ. क्या करना, तो शुरुआत तो ऐसे ही होता है. यू गो टू स्टार्ट लाइक दिस. देन क्रिएटिंग माइक्रो हैबिट्स. Now, what happens is when we see any, you do this session or you do this any topper talk, your motivation increases very high, because एक सपना देखना पड़ता है, एक विजन होता है कि मैं ऐसा करूंगा, I'll do this, I'll start my day at 7 o'clock, I'll start with maths, then I'll start with CSAT, then I'll start with my optional subject, then I'll take a break, then I'll start my GS of the day, current affair, read news, like that. You create something like that. But what is that if you create a micro habit, if you create a daily routine of things which is having enough time for enough output study, same day, same time, same place, then your brain slowly agrees and accepts, okay, this is study time, this is break time, this is this subject time. You have to remain non-negotiable to yourself to generate a micro habit. When was the last micro habit you created ever for yourself? याद कर, अगर आपने 12th में किया था और इन कॉलेज किया था और एनीवेयर, एनी टाइम, व्हेन डिड यू डू दैट? इफ यू हैव नेवर डन दैट, take this as an opportunity to generate, to learn how to create one. It is going to help you throughout your life and professional career as well. तो आप एक चीज तो पकड़ लो, क्या करना है उसमें. एक one of the thing, just your daily habit at a daily time, at a daily schedule, and then we can start from there. Similarly, you have 7 days, it is fixed, what days, what is going to come, and you plan your days, you put your timeline, you put your things, तब क्या करना है, you divide your days and time accordingly and see that you follow. स्कूल में भी होता था कि the PT day used to be one particular day, somewhere on Saturdays or maybe Wednesday, and the dress to PT was white color dress with the shoes also in white. So one used to feel that, okay, psychologically, whenever Saturday came, you knew that, okay, today is PT day, today morning I have to. So like that, you got to prepare your, because जो तुमने preparation आज से start की है, it is going to go till at least 2 attempts. So you need to put yourself in that regularity of activity. Now ये सब नई चीजें हैं, कई मतलब activity of brain, and how much you can focus, how much time does it take to cognitive learning. These are certain things which the studies have shown, and they say like why a session is of 90 minutes, why 45 minutes to break, with a break of 5 minutes works better, how much is your recall retention capacity. ये सारी चीजें
well proved on the written notes, so hence many times, even if you don't know, but your brain will be working on that pattern. So better align your preparation towards your brain working pattern so that when it is active, when it is the most learning stage, it is actually pushing its own limit to prepare and learn when it comes to UPS. But otherwise, ये है बड़ा simple सा है, you start feeling that tiredness, and when that creeps in, तो पढ़ाई का तो मतलब गया ही, because then your body is not ready to take any knowledge. It only feels कि कहीं एक ब्रेक ले लूं, सोने को मिल जाए, ओहो एक नींबू पानी पी लूं, चाय पी लूं, like that. The brain goes into all these other aspects rather than on the study aspect. तो आई थिंक आप अपना एक टेबल, स्टडी टेबल होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडीइंग, यू प्लान योर स्टडी schedule, keep your study books ready. When you are sitting in front of laptop and your study book, keep your mobile in silent, do not disturb mode for at least 45 minutes, and create a tracker and accountability loop. Now, my daily revision module will have a tracker also, and I will be introducing it slowly. And how to utilize it also, I'll be telling. And on the basis of that, your interaction with mentor will happen. So, how much you are putting daily will be something which I will also help you to stay aligned. और रात को जब आप सोते हो, when you're week by, because we scheduled a week by week schedule, you should be able to also judge your own preparation or your own pattern of learning what you did. कितना कर पाए, कितना आपका गोल था, where did you reach finally, like that. So coming to the session today, yeah, it sounds very, क्या ही पढ़ा रहा है सर, कंसिस्टेंसी वगैरह. जो भी मैंने आज बताया है, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट, understand, ask yourself, have a conversation with yourself, and create something for yourself and keep it. जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपके पास ये है कि मुझे कंसिस्टेंसी समझ में आता है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया है कि नहीं. हाउ मच आई नो माई सेल्फ, हाउ मच व्हाट ट्रिगर्स मी, कहाँ मेरा मूड कब ठीक होता है, कब खराब होता है, क्या मेरा स्लीपिंग पैटर्न है, क्या मेरा, ऑल दिस थिंग. Once you have awareness of all these things, you'll be able to create a system for yourself. And slowly, slowly, देखना एक, you will realize that when you start small, every day small activity adds up to a larger accomplishment. I will give one simple example. Uh, the GS Foundation plan, which is the plan which I'm talking about, how beginners start. Every topper, everyone in the UPSC stream will say कि आपको सबसे पहले, once you get the notification, you read the notification, the syllabus, and then you realize that syllabus is very generic. You need to start with NCRT books from class 6 to class 12. Old NCRT, new NCRT, or however it is, you start from. And once you do that, then you should go to the sources that more master's level book or the graduation level books, like for Lakshmikant and for this. So there are some standard names around it. Now, खुदा क्या है कि when this happens in CRT, many of them, एक ही दिन में खत्म कर लेते हैं खड़ाक से, या 2 दिन में, 4 दिन में. We don't give any time, and within 1 month maximum NCRT is over and we move on to the bigger books. बट जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, हमको समझ में आता है यार, ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के सोर्सेस से कर रहे हैं और मेरे को याद ही नहीं कुछ भी. तो माय थिंग इज कि वी डू नॉट बिल्ड द फाउंडेशन गिविंग इट अ प्रॉपर टाइम.
अगर आपको ये पता होगा कि कैसे एक दीवार का ढांचा बनता है, जब एक फाउंडेशन बनता है, दे गिव द एंटायर टाइम फॉर इट्स ड्राइंग, वो ठीक से सूख जाए। एक बार वो सूखा बन जाएगा, सूख जाएगा, देन यू दे बिग लार्जर टू लार्जर, बिल्डिंग विथ हाई हाइट्स। बट अगर फाउंडेशन वीक रहेगा, तो जल्दीबाजी में फाउंडेशन बना दिया, उसके बाद इमीडिएटली और बिल्डिंग बना दिया, तो देयर विल ऑलवेज बी अ चांस ऑफ कोलैप्स व्हेनेवर दैट एक्सटर्नल एक्टिविटी विच हैपेंस। तो सिमिलर इज आपका प्रिपरेशन। हम जब जीएस का फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग चैप्टर बाय चैप्टर, एवरी डे यू हैव टू हैव सम पेशेंस। क्या ब्रीच कर लो, कितना पढ़ लोगे आगे, slowly you add on to your schedule of increasing as you start the process, as you start enjoying the process. So that's where difference lies between people who clear prelims or clear mains, and people who are, even though they are clearing it at any stage, but are not enabled to see themselves as a positive result at the end of the. So with this, I would say that you have any queries which you need to ask your mentor in any of the matter of subject, you can always reach out to me this in the weekly session. Apart from that, you have my number to DM, that is also there in the description. But I would like to announce on the answer writing evaluation process program, which also I had shared previously, is open for people to enroll, especially the repeaters over there. And second is my geography optional thing, which I mentioned. You will surely get an email and details around it. Uh, so with that, I think we close today's session. आपको अगर कोई डाउट है, प्लीज DM me, and I hope I am able to get a clarity of thoughts in multiple of your actions you have taken or will be doing or taking to be a part of the civil services of India through this examination. With this, thank you. All the best.